Yeah. Well, talking about the subject business communication, we need to understand the two concepts. The two concepts over here are, the first is communication, the other one is business. As you all are studying commerce, you must be aware of the concept of business. Am I right? What a business is? Basically, it includes those organizations which are engaged in the production and distribution of goods and services. Fine. And the major objective of these organizations is to earn profit. Now, coming to the communication part, communication is maybe defined as the flow of material information like perception, understanding, and imagination among various parties. So, when you combine these two concepts of communication and business, we get business communication. Basically, it can be said that the flow of information perception either within a business organization or outside the organization among different parties can be termed as business communication. Now, as you can see on the screen, the word communication originated from the Latin word communis. This term communis is very important, can become in your objectives, and it is important to mention whenever you are answering a long answer regarding the concept of communication, to do mention this word from which. Ma'am, we don't Yes, have the objectives in this examination part. you don't have the objectives. Okay, no issue. Yes, Okay, ma'am. okay. I am We not have aware of the only long current pattern. questions. Only long, no short. Short bits are only 5 questions, Okay, and we have 12 marks questions, and 20 marks question is one. okay, essay type maybe. Okay, sure. So whenever you are, this is the basic question describing about the concept of the subject, your business communication. So whenever your first question definitely is going to come on the concept of business communication along with the features, objectives, or maybe process. So this thing is going to definitely come in the examination where you need to define business communication. So over here, let's talk about communication. So this word communication has been derived, or you can say originated from the Latin word which is communis. You can see on the screen, right? Which means common. And the word business stands for any economic activity which is undertaken with a view to earn profit, and communication undertaken in the process of this activity is termed as business communication, right? That means sharing of information in the context of business is business communication. Am I clear? Yes, ma'am. Yeah. Next, we can see two definitions. Do quote definitions in your exams. So over here, we have two definitions. One is given by Keith Davis and the other one is from the Wikipedia. So Keith Davis said, communication is generally defined as the activity of conveying information. Very easy definition, you can memorize it, right? So do mention the name of the author who has given the definition as well as quote the definition in inverted commas, correct? So your communication is generally defined as the activity of conveying information, a very easy definition. Next one is a Wikipedia. From Wikipedia, we got this one, which says, communication is something people do to understand human communication process. One must understand how people relate to each other. So this is the second definition from the Wikipedia. Do mention um, uh, the definition, whether you have notes or any books or any other study material with you, definition would be there. So just memorize one or two definition and do mention in the class and highlight those definitions. That would be the scoring point, right? Next, we will talk about the objectives of business communication. Why business communication is important. What is the you say the basic object of studying the subject and the importance of the subject, right? Why do we study this subject? So very first one is over here, you can see is stronger decision making. Well, business communication help your ability to communicate effectively. It
increase productivity, both yours and your organization. Well, when you communicate clearly, when you communicate strongly, definitely your productivity is going to increase because you are conveying your things very clearly, right? So that is the very first objective is being served, that is stronger decision making. Second one is increase productivity. Well, with good communication skills, you can anticipate problems, make decision, you can coordinate workflow, supervise others, and develop relationship, also promote products and services. So this is how your productivity can be increased. That is by anticipating problem. You already know that some problem may arise. So when you have good communication flow in your organization, then only you will be able to anticipate the incoming issues, incoming problems. And similarly, when you know what is going to happen in the future, you will be able to make proper decisions, right? A stronger decision, and which would lead to increased productivity. Now, next one is steadily workflow. Well, communication acts as a tool for the effective work-related flow of information. When you have correct information and you are delivering your information correctly to the audience, definitely the workflow will be very smooth, very steady. Correct? Next one is strong business relationship and enhance professional image. Well, you can shape the impressions of you and your company, make on colleagues, your employees, supervisors, investors, and customers, in addition to perceiving and responding to the needs of these stakeholders. Who are the stakeholders in a company? Anybody who is a stakeholder? Anybody can unmute and tell me who is the stakeholder? The products which are taking from the wholesale. We are talking about the people, Vite. Stakeholders. Heard of this term? No, ma'am. Actually, stakeholders are the people who get affected by your business, right? Yes. Let's say you have a business, let's say of making biscuits. You have a biscuit factory, right? So who will be the stakeholders? Your employees will be the stakeholders. The people working in the organization, in the management, in the administration will be the stakeholders. Now, when the biscuits are being produced in the company, it will be transported or it will be distributed through a channel. So all the people who are in touch with you for the distribution process will be the stakeholders. Now, the market where your biscuit goes for the selling purpose, those people will be your stakeholders. Also, the customers who are going to purchase your biscuit and consume it, those will be your stakeholders. Got my point? Yes, ma'am. Yeah. So who will be the stakeholders? The people who get affected by your business activities are the stakeholders, right? They have a say. You can say they have a say in your business, right? It's like that. When you have, take example of your family, there will be children, there will be grandparents, there will be other relatives. So you have a very large, you can say, family, a group of family members, and each one is having a say in your lives. So this is how stakeholders can be defined, right? While explaining, if any term is there which you people are not understanding, do ask me, I'll give the explanation. So where were we? We were at strong business relationships and enhanced um, professional image. So over here we were talking about the stakeholders, right? So the people who are affected by your business, right? So whenever you are communicating with those people, your communication channel, the workflow and the flow of the things which you are delivering to them should be very clear. The objectives need to be very clear of your businesses. So that is
strong business relationship, and enhanced professional image. Next one is clearer promotional materials. So, clearer promotional material, we can say that your organization need for effective reach of company name and public promotion are based on effective promotional material, such as advertisement, billboards are there, online advertisement are there, posters, etc. So these are the promotional materials termed as advertisements. So these are all communicated for effective message delivery and meaning. Next one is to provide advice. Well, giving advice is based on individual oriented and work oriented. Advice should not be to the given to the person for pinpointing his mistakes, right? Rather, it should be helpful for his improvement. Effective advice promote understanding, and it can be a two-way process also. It has subordinate staff if the subordinate staff given freedom, right? So that is provide advice. So what they are saying over here, your basic aim should be to give advice, not to pinpoint the mistakes of other, right? So effective advice promote understanding. It will promote understanding, and it can be a two-way process. So it should not be like that ki only one person is speaking and other is just listening. So it need to be a two-way process where you give the information, also you take the feedback from it, right? Next is suggestion. So suggestion is supposed to be very mild and subtle form of communication, right? Suggestions are welcomed for it, not obligatory to accept them, right? While say గుడ్ మార్నింగ్ suggestions మ్యామ్. are, yeah, good morning. Tell me. మ్యామ్ అప్పుడప్పుడు కొంచెం తెలుగులో కూడా చెప్పారా మ్యామ్? మేము తెలుగు వాళ్ళము. I'm really sorry, but I would have spoken in English, and मैंने बोला होता, if Hindi is comfortable with you, I can speak in Hindi. Yes ma'am. Telugu is I can Hindi comfortable ma'am. okay. So I'll be explaining a little bit in English and Hindi. That will do for you people. Okay ma'am. Okay ma'am. Okay, sure. Thank you so much. Telugu is not my forte, so I'm really sorry about that. Okay, no problem ma'am. Okay. So over here we are talking about suggestions. Well, suggestions का मतलब सुझाव. It's like जब हम किसी को कुछ सुझाव देते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस बात को माने या accept करे, right? So suggestions, what they are saying, suggestions are very mild and subtle. That means they are very soft in nature when we talk about suggestions, right? So it's not obligatory. जरूरी नहीं है कि you just accept them. So it is for in general purpose suggestions. Next is, well, persuasion. Persuasion is like I say something, मैं कुछ बोलूं आपको, और सिर्फ मेरे बोलने से आप उस चीज को अपना लें या वो काम आप करने लगे. So that is known as persuasion. So communication need to be like that कि I just say a line, I just say a few sentences, and you are so persuaded by my saying that you start doing the same thing. I'm not asking, मैं आपको बोल रही नहीं हूँ कि आप ये काम करो, but just by listening to the things, you are so persuaded that you start doing. करेक्ट, कि बात सुने से ही आप वो काम स्टार्ट करने का ना, दैट इज परसुएशन. या सिर्फ बोलते नहीं है ऐसा कि हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपको बात समझ आ जाएगी और आप वो काम करने लगेंगे. इट्स लाइक दैट, persuasion. Next one is education. So education is very conscious process of communication. Why? Because it involves both teaching as well as learning. Like right now we are having this education part. It does not mean I am just speaking. It has to be you people need to understand. Then only this process of education will be complete, right? जरूरी है कि मैं जो बोल रही हूँ वो बात आपको समझ में आए. अगर वो आपको समझ में नहीं आएगी तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एम है ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करने का, वो फुलफिल नहीं होगा. गेटिंग माय पॉइंट? So that is education. Now education in an organization could be in form of training, or education is given for management, employees, as well as for outside public to know
or to understand the business organization. So that was education. Next is warning. Well, if the employees do not abide by the norms of the organization, warning is a power communication tool, and it can be general and specific. A specific warning should be administered in private and after thorough investigation, whereas the aim of the warning should be for the betterment of organization. So that is the concept of warning. Next is raising morale and motivation. Well, morale stands for mental health, right? And it has some of several qualities like courage, resolution, confidence, high morale, and effective performance go hand in hand, right? Also, motivation is a process that account for an individual intensity, direction, and persistence of effort toward attaining a goal. Now we are talking about this raising morale and motivation. Now, जैसे कि मैंने पहले explain किया about persuasion कि whatever I am saying, just by listening to it आप वो काम करना शुरू कर दे रहे हैं. So communication, good communication need to be ऑफ रेजिंग मोरल, जिससे कि आपका मोरल राइज हो और आप मोटिवेटेड हो वो काम करने के लिए, या जो आपका मैनेजर आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि दिस वर्क हैज टू बी डन, सो वो इस वे में आपको कम्युनिकेट करे कि वो बात आपको क्लियरली समझ में आए और आप खुद ही वो बात सुन के ही आप मोटिवेटेड फील करें कि हाँ आज का टास्क ये है और मुझे ये करना है. सो गुड कम्युनिकेशन नीड टू बी इन अ फॉर्म दैट इट raise your morale as well as your motivation. Next is to give and receive information. Like पहले भी मैंने explain किया, it need not be just one way. It has to be the two way where you give as well as you receive information. Like अभी हमारे क्लास में किसी ने बोला कि तेलुगु में पढ़ाइए मैम, और फिर वो फीडबैक लेके मैंने उनको रिप्लाई किया कि मैं तेलुगु नहीं पढ़ा सकती, आई कैन एक्सप्लेन यू इन हिंदी. सो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग ओवर हियर. मैं सिर्फ अगर बोलते जाऊं आपकी बात नहीं सुनूं तो आपको डेफिनेटली समझ में नहीं आने वाला है. किसी को लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, किसी को मैं तेज पढ़ाने से प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को सिर्फ स्क्रीन देखने से प्रॉब्लम होगी, कुछ लोगों को क्लासरूम स्टडीज अच्छी लगती है, ऑनलाइन समझ में नहीं आता है. सो दिस इज हाउ कम्युनिकेशन नीड टू टेक प्लेस, वेयर जब एम्प्लॉयज को कुछ मैनेजर समझा रहे हैं या एम्प्लॉयज अपनी प्रॉब्लम मैनेजर्स को बता रहे हैं, सो इट हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन. इट नीड नॉट बी इन जस्ट वन वे, राइट? कि ऐसा ना हो कि सिर्फ एम्प्लॉय बोलता जा रहा है मैनेजर सुन रहा है, या मैनेजर बोलता जा रहा है एम्प्लॉय सुन रहा है, राइट? Next one is to provide counseling. It is similar to like morale and motivation only. And the last one is to improve the discipline. Basically, discipline is the foremost part of any business communication. The various disciplinary codes are effectively communicated to employees through disciplinary codes. So in organization, there are various disciplinary codes which are being communicated to the employees, and through that channel only they need to communicate. Like now we are having this disciplinary code that classes will be held in online mode only. जैसे आपके क्लास online mode में ही होना है, so this is our disciplinary code. Similarly, organization में ही communicate करने के लिए there are various disciplinary code which are being followed. Clear till here? Okay. Shall I continue to the next thing? Anybody? Yes, no? Yes, madam. Okay. So these were the objectives of communication. Just give the heading and try explaining whenever you are writing the answer how many maybe above 10 objectives I have presented over here. 10 to 8 are sufficient enough for your long answer. So out of them choose any 10 which seems easy to you.
select them and write on them, right? Now coming to the elements of communication. Elements are basically the part of process of communication. So first of all, we will understand these elements, and then we will talk about the process of communication, right? So over here, we can see the very first element of communication, that is sender, right? So who is a sender? So sender is someone who is sending the message to someone. For example, when you see when you open the television and you see any ad on your television, so what is there? That is the sender. This television is acting as a sender. They are providing you the information. आप कोई ad देख रहे हैं आप टीवी के ऊपर, तो टीवी act कर रहा है as a medium of sender. That TV is sending you the message, is showing you the message, right? So that is the sender, right? Or you can say, right now I am explaining you the concept of element of communication, so I am the sender over here, correct? Next one is encoding. You can see on the screen, encoding, right? So when we address someone, we use language, right? Visuals, body gestures, etc. हम जब किसी से बात करते हैं तो हम यूज करते हैं अपने बॉडी जेस्चर्स को, लाइक किसी को हेलो बोलते हैं तो हम कैसे हेलो बोलते हैं? या तो हम हैंडशेक करते हैं, या हम दूर है तो ऐसा हाथ को वेव करके बताते हैं, राइट? तो हम अगर सिर्फ हाथ को वेव करें और हमारी आवाज उस तक ना जाए, सो हमारा मैसेज तो चला गया ना, दैट आई एम सेइंग हेलो टू यू, राइट? सो दैट इज एनकोडिंग. तो जरूरी नहीं है कि हम कुछ बोल करके ही कम्युनिकेट करें. कभी कभी हम अपने जेस्चर्स से, अपने हाथ से, अपनी आंखों से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी हम कम्युनिकेट करते हैं. सो दैट इज एनकोडिंग, राइट? सो दैट इज टू कम्युनिकेट. अभी हम जैसे रोड पे जा रहे होते हैं और मान लीजिए हम हाईवे पे हैं, और वहां पे हमको स्पीड का साइन आता है. ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड यू गेट दैट साइन, राइट? कि हमको 60 का स्पीड रखना है या हमको 80 का स्पीड रखना है. सबने देखा है ना? यस, नो? स्पीड का साइन आप लोगों ने रोड के साइड में देखा है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो रोड पे, हाईवे पे, किधर भी? यस, टेल मी. यस, नो, एनीथिंग? किसी ने नहीं देखा रोड पे स्पीड का साइन? यस मैम। हाँ, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए तो जल्दी जल्दी बात खत्म हो. इतना सोचने का नहीं ना, फटाफट. ये स्टिल, हाँ बोलिए, देखा है? यस मैम, वी हाँ, सीन। राइट राइट. तो वो स्पीड का साइन जब आप देखते हो तो आपको क्या 30 स्पीड, 40 स्पीड लिमिट। पता चलता है? कि आपको आपका व्हीकल का स्पीड वो रेंज में ही रखना है, उसके ऊपर नहीं जाना है. कोई आपको बता रहा है आकर के? नहीं. मैम नो। किसी ने आपको बताया क्या यहाँ पे स्पीड का बोर्ड है? यू आर कॉन्शियस इनफ कि आप वो स्पीड का बोर्ड देखो और वो बात समझ जाओ कि मुझे अपना व्हीकल का स्पीड इसके ऊपर नहीं रखना है, राइट? यही पर्पज है ना वो स्पीड के बोर्ड का. या जस्ट नाउ आई हैव स्टॉप द स्क्रीन शेयर. यही पर्पस होता है ना. आपको कोई आके तो नहीं बोलता ना कि ये देखो और आपका आपका गाड़ी का स्पीड कम कर दो. नहीं बोलते ना. यू जस्ट सी द बोर्ड एंड यू अंडरस्टैंड. सो दिस इज हाउ एनकोडिंग इज बीन डन, राइट? कि कभी कभी इंफॉर्मेशन देने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई आपको कुछ बोले, दे से यू समथिंग. इट्स in the form of visuals, it's in the form of sign language, it's in the form of body language as well. So that is encoding. Next one is the message. Well, the symbol themselves constitute the message. Hence the visuals, headlines of body, taglines, brand name, logo, etc. are called part of the message. If you already heard the name of pantaloons, let's say example, pantaloons का नाम सबने सुना है? Pantaloons. Okay, let's say D-Mart. Tell me, you people have heard of the name D-Mart? Yes. यस मैम।
no? सुना है ना? So what image when I just say I have to go to DMart, you have this image in your mind of DMart, right? अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं जा रही हूँ DMart, या आप कहाँ से आ रहे हो, आपने बोला आप DMart से आ रहे हो, so we have a image in our mind just by listening to the name, because the name is famous, right? Abhi, if I say I need to buy some groceries, you'll just pop up with the same, ma'am, you go to DMart, you can get there. Why? Because मैंने ये नहीं बोला कि मुझे ग्रोसरी शॉप जाना है या मुझे बाजार जाना है. यू आर जस्ट टेकिंग अ नेम ऑफ इट कि डीमार्ट. व्हाट इज डीमार्ट? यू नो, वेरियस थिंग्स वी कैन परचेज फ्रॉम देयर. सो जस्ट बाय टेकिंग द नेम ऑफ द ब्रांड, यू आर जस्ट सेइंग कि हाँ, आपको, आप ये नहीं बोल रहे कि आपको ग्रोसरीज लेना है मैडम तो आपको वहां मिल जाएगा. इट्स नॉट लाइक, यू आर जस्ट सेइंग द नेम, you go to DMart, you will get it. Because मैसेज में ही वो चीज ऑब्वियस है कि यू नो कि हाँ, जब हम ये करेंगे तो ये काम हो जाएगा. सो दैट इज द मैसेज. नेक्स्ट वन इज डिकोडिंग. डिकोडिंग इज टू अंडरस्टैंड द एनकोडिंग. लाइक मैं अगर कोई चीज आपसे कन्वे करना चाह रही हूँ, कन्वे कर रही हूँ, वो चीज जब आपको समझ में आ जाएगी, सो दैट विल बी टर्म एज decoding. So we can say like once we receive the message, we start interpreting it. जब मैं कुछ बोल रही हूँ, आप उसको एनालाइज करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, राइट? सो एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि व्हेन यू लुक एट द, प्लीज मैम ज्वाइन, वेयर आई नीड टू ज्वाइन. Well, I see a message in the in the chat box, ma'am, please join, and there is a link. Please let me know where I need to join. Okay, this is the WhatsApp group. Sorry, I'll provide you my email address. I told you, na. I'll provide you my email address. You can contact me. I'll give. So where were we? We were at decoding, right? So decoding is like interpreting the message. Next one is receiver. Well, a receiver is one who reads or listen or hear the message of the communicator. Yeah, I know display is not visible. Just wait a minute. Let me explain. I'll share the screen. Well, a receiver is one who read, listen or hear the message of the communicator. Now, so that is the receiver. And the last one is the feedback. Feedback is like every communicator waits to know whether, अभी just now जैसे कि मैं कुछ भी explain कर रही हूँ and I'm asking you, say yes, no, reply, anything, should I continue? So what is this? I am asking for a feedback, right? So this is the feedback part. So when every communicator waits to know whether the message has reached the target audience or not, or it has been accepted or not. In other words, we can say one waits for feedback from the audience. The most desirable form of feedback from the marketer's point of view, of course, would be purchase of the product by the customer, right? आप जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही थी, एक बिस्किट की फैक्ट्री का, आपका बिस्किट का फैक्ट्री है, अगर आपने जो बिस्किट प्रोड्यूस करा है, उसको इन्वेंट रखा है, उसको मार्केट में भेजा है बेचने के लिए, जब कस्टमर वो बिस्किट खरीद लेगा, तो एक तरह का फीडबैक आपको मिला कि यस, आई एम डूइंग गुड, मैंने जो बनाया है वो बिक रहा है, और वो बहुत अच्छी तरह से अगर मार्केट में बिकेगा, एक के लाइक जल्दी से जल्दी स्टॉक आपका खत्म हो जाएगा, तो आपको क्या फीडबैक मिला उससे कि जो आपने बनाया है वो अच्छा बनाया है और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो दैट इज द फॉर्म ऑफ फीडबैक यू आर गेटिंग, राइट? क्या? I will send the PPT, I will send the notes, I will discuss the important in the last class. I am sharing my email address. Anything is there, please let me know. Email me. Yeah.
Here is my email ID. अभी ठीक है? I will share the PPT after the classes. Okay, ma'am. Right? चलिए. Now we will discuss the process of communication. Can you see on the screen the process? Yes. Abhi we have discussed about the sender, who is sending the message, encoding, that means how the message is being sent, message, what is to be conveyed is the message. Then we have decoding, that means you understanding the thing which has been sent, which have been communicated to you, and the receiver. Over here you can see two other things. One is the feedback and one is the noise, right? Now let's understand this process of communication. इसको जल्दी से आप लोग कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए. It will be easier to understand, right? Feedback. See, this process of communication is very important. If it is coming by name in the examination, तब तो आपको लिखना ही लिखना है. Otherwise, when आपको जब communication define करने के लिए बोला जा रहा है, in that case also आपको लिखना है, right? Okay. Kindly give me a moment, please, huh? Just a minute. ENO. Encoding. Decoding. Listen. No. Okay, ma'am, completed. Well, sorry for the interruption. So have you people note down the process? Yes, ma'am. Yeah. So very first one is the sender. Sender is, let's say, अभी का एग्जांपल लेते हैं कि मैं कुछ आपको बता रही हूँ या ये बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट? सो आई एम द सेंडर. ठीक है, आई एम एक्टिंग एज द सेंडर ओवर हियर. नेक्स्ट वन इज एनकोडिंग. एनकोडिंग का मतलब हाउ आई एम टीचिंग यू. मैं कैसे टीच कर रही हूँ आपको? थ्रू दिस ऑनलाइन मोड. And how I am explaining you? Through this PPT or through my audio, right? So these are the two medium through which I am sending you or I am encoding my messages, right? कैसा encode कर रही हूँ मैं, कैसे explain कर रही हूँ आपको? Through this PPT I am explaining you. The second thing, through my audio I am explaining you. Got my point? Yes. This is how encoding is being done. Next one is the message. The message is to understand the process of communication. Yeah, to understand the concept of business communication is the message.
ऑफ टुडेज कम्युनिकेशन, मतलब आज जो हम बात कर रहे हैं या जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसका बेसिक पर्पस क्या है? टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, टू लर्न द सब्जेक्ट, राइट? सो दैट इज द मैसेज ओवर हियर. क्लियर? नेक्स्ट वन इज डिकोडिंग. नाउ अभी आप में से कुछ किसी ने बोला कि ये मैम इंग्लिश पूरा समझ में नहीं आ रहा है, कैन यू स्पीक इन तेलुगु और हिंदी और एनी अदर मीडियम? सो दिस इज हाउ डिकोडिंग इज बीन डन. जिन लोगों को कंप्लीटली इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा था, उनका प्रोसेस यहाँ पर ही रुक गया. डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? प्रोसेस इधर ही रुक गया, कंप्लीट नहीं हुआ. कैन यू सी द कर्सर ऑन द स्क्रीन? राइट? यहाँ मैम पर ये डिकोडिंग पर ही रुक गया प्रोसेस, क्योंकि उनको कंप्लीटली इंग्लिश समझ नहीं आ रहा था. सो दैट इज द रीजन डिकोडिंग has stopped over here, and this whole process of communication is not been completed. Why? Because of the language barrier. उनको language का barrier था, उनको समझ नहीं आ रहा था complete English. वो चाहते थे किसी और language में बताना. जब when I started speaking in other language या हिंदी में explain कर रही हूँ, तो ये process इधर से इधर पहुंच गया. यानी जो एनकोडिंग करके मैसेज में देना चाह रही थी, वो इधर पहुंच गया जब डिकोडिंग हो सकी उसकी. राइट? व्हेन डिकोडिंग इज बीन कंप्लीटेड, देन ओनली it has reached to the receiver. Got my point? ठीक है. So when you talk about the basic let's say concept of communication, we see sender, then we have encoding, we have message, decoding, and receiver. Right? So this is the basic thing. Now there are two other things. One is the feedback and the noise. नाउ टॉकिंग अबाउट द फीडबैक ओवर हियर, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल डिकोडिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपने मुझे बोला कुछ और लैंग्वेज यूज करिए सो दैट समझ में आए. सो आपने क्या दिया मुझे? टेल मी. फीडबैक. फीडबैक. करेक्ट. यू हैव गिवन मी द फीडबैक कि ये जो प्रोसेस चल रहा है मैडम आपके एक्सप्लेन करने का, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको ऐसे करिए तो समझ में आएगा. सो दिस इज द फीडबैक. सो आई हैव टेकन द फीडबैक. राइट? ये एरो देख रहे हैं? ये आप में से किसी ने मुझे सजेशन दिया लैंग्वेज चेंज करिए, दूसरा लैंग्वेज में पढ़ाइए. मैंने यहाँ फीडबैक लिया और ये फीडबैक इनकॉर्पोरेट कर दिया फिर से प्रोसेस में. नाउ अगेन आई एम यूजिंग द डुअल लैंग्वेज, ताकि इंग्लिश और हिंदी आप दोनों को लैंग्वेज में समझ में आए. अगेन द प्रोसेस विल गो ऑन एंड इट विल बी completed over here. Clear? Now, अच्छा, अगर आप इतना भी एग्जाम में शो करते हैं तो दैट इज सफिशिएंट एनफ. एज यू कैन सी यहाँ पर वी हैव नॉइज. अगर आप नॉइज को मेंशन नहीं भी कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, इट्स ओके, इट्स गुड अगर आप मेंशन करें. नाउ विल टॉक अबाउट द नॉइज. हो सकता है कि बीच में जस्ट नाउ आई गॉट अ कॉल, इंपॉर्टेंट कॉल, जिसकी वजह से मैं प्रोसेस एक्सप्लेन करते करते रुक गई. सो व्हाट वाज दैट? That was the noise. That means a disturbance between, हमारा जो ये एक्सप्लेनेशन क्लास एक्सप्लेनेशन का प्रोसेस चल रहा है, उस बीच में मेरे को एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया. आई हैड टू म्यूट माई सेल्फ एंड स्टॉप द क्लास. दैट हैज एक्टेड ओवर हियर एज व्हाट? नॉइज. गॉट माई पॉइंट? Got my point? What is noise over here? You can say Yes, any ma'am. barriers or any barrier or any disturbance. So this is how the process of communication has been completed. Just take a moment. कुछ भी क्लियर नहीं है ये प्रोसेस में, सो जस्ट आस्क मी नाउ फास्ट. क्लियर? Now we'll move to the next topic, that is barriers of communication. जो हमने प्रोसेस में नॉइज पढ़ा था ना, so that is known as the barrier. Right?
So we have various barriers of communication. You can say various noise in the process of communication. So one by one, we will be discussing them. So the very first barrier over here is mechanical barrier, right? So communication process is a two-way process, we all know. So distance between the sender and the receiver of the message is an important barrier to communication. Noise and environmental factor also block the कम्युनिकेशन प्रोसेस. नाउ मैकेनिकल बैरियर का मतलब ये हुआ फिजिकली आप और मैं, आप आपके घर में है, मैं मेरे घर में हूँ, राइट? सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मैकेनिकल बैरियर बिटवीन अस. अगर हम लोग एक क्लासरूम में बैठ करके यही चीज एक्सप्लेन कर रहे होते तो दैट वुड बी मोर इफेक्टिव. एग्रीड और नॉट? Yes. यस और नो? So that over here is acting as mechanical barrier over here. That is the physical presence of the sender and the receiver is known as the mechanical barrier. और बीच में मान लीजिए कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाए, हमारा कॉल ड्रॉप हो जाए या नॉइज आ जाए बीच में से, लाइक मेरे को अभी एक कॉल आया जिसकी वजह से म्यूट किया मैंने. सो दैट इज ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो कम अंडर द मैकेनिकल बैरियर्स, राइट? Next one is the personal barrier. Well, the personal factors like difference in judgment, social values, inferiority complex, biasness, attitude, pressure of time, inability to communicate. So these are known as the personal or psychological barriers. That means कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं और जो सामने वाला होता है वो कुछ और ही समझता है. सो दैट इज द पर्सनल बैरियर. या आप एक एग्जांपल लीजिए, किसी के बारे में सोचिए आप कि जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, आप उससे बात करना भी पसंद नहीं करते बिल्कुल भी. जस्ट उस पर्सन के बारे में सोचिए आपके माइंड में. अब एक सिचुएशन लीजिए कि वो पर्सन आपके पास आके ही इज गिविंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, राइट? मगर आपके माइंड में तो ये थॉट है कि आई डोंट लाइक दिस पर्सन और ये मेरे पास आके तो बात करे ही नहीं, राइट? तो अगर वो कितना भी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना जा रहा होगा या जा रही होगी तो वो बात आप नहीं सुनोगे. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस पर्सनल बैरियर. गॉट माई पॉइंट? तो ऑलरेडी साइकोलॉजिकली आपके माइंड में चल रहा है कि ये जो बंदा या बंदी को जो भी मुझे ये बात बोल रही है, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू दिस. Why I'm not going to listen? Because I don't like it. I don't like listening to this person. I don't want this person near me. So how can I listen to that person? So this is how a personal barrier works, right? समझ में आया आपको? Yes, ma'am. ठीक है. और इसको एक दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि कोई ऐसा पर्सन जिसकी बात सुनना आपको बहुत अच्छा लगता हो, लेट्स से आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जिससे आपको बात करना बहुत अच्छा लगता हो, भले ही वो आपको एकदम कचरा इंफॉर्मेशन दे रहा हो जिसका कुछ लेना देना नहीं है या कुछ भी नहीं है, बट यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. वो बात का कोई मतलब नहीं है, कुछ मतलब अच्छा नहीं होने वाला वो बात से या वो इंफॉर्मेशन, स्टिल देन यू आर पुटिंग एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट योर फ्रेंड इज सेइंग. Fine. So this is how this personal barrier works. Next one is semantic or language barrier. Just now we have experienced this semantic and language barrier where I was explaining the whole thing in English. पूरा English में समझा रही थी, आपको समझ में नहीं आया because of the language thing, and it has acted as a barrier. जहाँ पे मैं जो explain कर रही हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा था because of the language barrier. Semantic is the same term used as language. Yeah, language या semantic एक ही चीज है. Well, you can say the semantic is the science of meaning. यानी कि जब आपको चीज समझ में आए उसको बोलते हैं semantic. The same word and symbols carry different meaning to different people. Well, difficulties in communication arise when the sender and the receiver of the message use word or symbol in different senses. So this is how semantic and language barrier work. Next one is the status barrier. Well, status or position in the hierarchy of the organization. Hierarchy क्या होता है organization में? आप लोगों ने सुना होगा business में levels होते हैं, right? We have lower level, middle level, higher level, right? So that is known as the hierarchy.
of the organization? Well, status or position of the hierarchy of organization is one of the fundamental barrier that obstruct free flow of information. अभी let's say हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं जाते हैं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ, देर इज सम शाइनेस कि आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे मुझे, इज इट देयर? यस, नो? नहीं दे रहे, या देर से दे रहे, या आप सोच रहे हो मैं जवाब दूंगी तो क्या होगा, मैडम क्या बोलेंगी, या दूसरे क्या सोचेंगे, राइट? सो दैट इज द स्टेटस बैरियर, यू कैन से कि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो हमारे सीनियर से कम्युनिकेट करने में, या वी फील दिस स्टेटस बैरियर कि हो सकता है कि वो एज अ सीनियर है, हाउ कैन वी आई टॉक लाइक दैट in front of my manager? So this is the status barrier, right? Similarly, we have the next one, that is organizational structure barrier. Well, effective communication largely depend upon sound organization structure. If the structure is complex, involving several layers of management, the breakdown or distortion in communication will arise. Definitely it will arise. Next we have is barrier due to inadequate attention. जब it is very clear, जब आप बात पे ध्यान नहीं देंगे, whatever is being taught to you, whatever is being communicated to you, obviously that would act as a barrier. That means inadequate attention. Well, inadequate attention to the message make communication less effective, and the message is likely to be misunderstood. Inattention may arise because of over business of communication or because of the message being contrary to the expectation and belief. जब आपको बात वो सुनना नहीं होती या आपके मतलब की नहीं होती, तो most of the time this is the reason कि आपको बात समझ में नहीं आती. That is inadequate attention. आपके मतलब की बात नहीं है तो आप सुनते नहीं हो, जब आप सुनोगे नहीं तो आप समझोगे नहीं, right? So that is inadequate attention. नेक्स्ट इज प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, यानी बोलने से पहले ही आप उस बात का मतलब निकाल लें और उसको समझ लीजिए. इट्स लाइक दैट, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन. वेल, सम पीपल हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म अ जजमेंट बिफोर लिसनिंग टू द एंटायर मैसेज कि हाँ ये तो अब यही बोलने वाली होंगी, काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? सो दिस इज नोन एज प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन. Next one is emotional attitude. Well, barriers may also arise due to emotional attitude because when emotions are strong, it is difficult to know the frame of mind of another person of group, right? So that is emotional attitude. Next one is resistance. We have barrier due to lack of mutual trust. Well, communication means sharing of ideas in common. When we communicate, we are trying to establish a common sense, right? Commonness, or not common sense, it's commonness. मतलब कुछ कॉमन निकालना, जो मैं बोल रही हूँ और जो आप समझ रहे हैं उसमें कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए, राइट? अगर उसमें कनेक्शन नहीं होगा तो मैं जो बोलूंगी वो आपको समझ में आएगा ही नहीं. सो दैट इज कि उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, कॉमननेस बिटवीन यू एंड मी. So there has to be a mutual trust. Now we talk about trust, that means कि भरोसा. When you know कि हाँ, जब आपको कुछ सामने वाला बोल रहा है कि हाँ, आपको वो बात तभी समझ में आएगी जब आपको ट्रस्ट होगा उस पर्सन के ऊपर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग आपका ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो यू हैव दिस ट्रस्ट कि दीज आर द टीचर्स, दीज आर द लेक्चरर्स, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गिव अस द करेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर examinations. So that is the mutual trust you people have in us, right? जब आपको लगेगा कि नहीं ये क्लासेस ही बेकार है, हमको कुछ समझने का मतलब नहीं है, so definitely barrier will arise. Got my point? Yes. Now, next is resistance to change. Well, a resistance to change means it is general tendency of human being to stick to old and customary patterns of life. Like जब यूजुअली जब हमारे पास पहले क्लासेस होते थे फिजिकल मोड में, और अभी वी हैव टर्न्ड इनटू द ऑनलाइन मोड. अभी तो काफी टाइम हो गया है, वी आर इनटू ऑनलाइन मोड, एंड
गेटिंग द लेसन्स ऑनलाइन, बट पहले जो फिजिकल क्लासेस होती थी उससे और ऑनलाइन के ट्रांजिशन में कितना ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुआ। किसी के पास डिवाइस नहीं था, आपके पास मोबाइल नहीं थे, या इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, तो बहुत सारी चीजें थी जो आप स्विच होना के लिए मुश्किल हुआ आपको फिजिकल क्लास से ऑनलाइन क्लास के लिए। सो दैट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। जो जो लोग इजिली शिफ्ट हो गए फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन, उनके लिए इजी था एक्सप्लेनेशन। जिनको प्रॉब्लम हुई उनको क्लासेस समझने में भी प्रॉब्लम हुई, राइट? सो दैट इज रेजिस्टेंस टू चेंज. So these are the basic barriers to communication. How many are there? 5, 6, 7, 8, 9, 10 are there. पूरे ही important है, आप note कर लीजिए और explain करिए whenever you are getting question related to barriers to communication. Next, other barriers could be lack of attention, interest, distraction, or irrelevance to the receiver. Now, difference in perception and viewpoint, physical disabilities such as hearing problem or speech difficulty, या सुनाई नहीं दे रहा या बोलना नहीं आता है. Language differences and the difficulty to understand unfamiliar accent. कभी कभी बोलने के कभी हम मान लीजिए इंग्लिश ही बात कर रहे हैं या हिंदी ही बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का हिंदी बोलने का तरीका कुछ अलग होता है, तो हम वो भी नहीं समझ पाते हैं क्योंकि दैट इज वो एक्सेंट जो होता है उनका वो अलग होता है. सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ बैरियर, राइट? Other than that, lack of attention is there, interest, distraction, or irrelevance to the receiver is there, right? So with this, we are done with the barriers of communication. Any issues with the concept, objectives, process, and barriers? If anything is there, I'm giving a moment here. Please ask me. Yes, tell me. Clear with the process, barriers, everything discussed today? Now, there is one more topic over here. We have this principle of communication. I'll just explain. इसको note कर लीजिए या screenshot ले लीजिए इसका. PPT तो I'll share you with you people later. But this principle of communication we have. So the very first principle over here, we have principle of clarity. That means the information, the message which is being conveyed to you, given to you, need to be very clear. Ma'am, display not available. What? The Display. Oh, display sorry. 1 minute. Sorry. Yeah. See now? Okay. Yeah. Just Yes, note ma'am. down these. How many? 1, 2, 3. Ma'am, other bargain at that once again explain, ma'am. 9th one. 9th one. Which one? 9th? Page 9, ma'am. Yeah. Yeah. Which one? This one only, ma'am. This one only. So we Yeah. have lack of attention. If you people don't pay attention to what is being conveyed to you, आपको जो बोला जा रहा है आप वो सुनोगे नहीं ठीक से, आपका दिमाग किधर और होगा. सो दैट इज लैक ऑफ अटेंशन. इंटरेस्ट. आपका दिमाग है बिजनेस कम्युनिकेशन, आपको पढ़ना चाहिए बिजनेस कम्युनिकेशन, मगर आपका दिमाग है कि अभी इसके बाद मैं खाना क्या खाऊंगा या खाऊंगी, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है ये पढ़ने में. सो दैट इज एक्टिंग एज बैरियर. डिस्ट्रैक्शन. आपका क्लास तो इधर चल रहा है मगर फोन से ज्वाइन तो किया हुआ है, मगर साथ में कुछ और चैटिंग भी चल रहा है साथ में, राइट? या घर में मम्मी कुछ बोल रही है, भाई बहन कुछ बोल रहे हैं, या बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं. सो दैट इज डिस्ट्रैक्शंस, राइट? और इररिलेवेंस टू द रिसीवर, यानी कि जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आपके मतलब का नहीं है. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. अभी तो मैं जो बोल रही हूँ सब आपके मतलब का है, एग्जाम का है. इफ आई से समथिंग विच इज इररिलेवेंट टू योर सब्जेक्ट, सो दैट विल बी द बैरियर, राइट?
नेक्स्ट इज डिफरेंस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट। जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि आई एम सेइंग समथिंग बट आपका माइंड किधर हो रही है, आप वो समझना ही नहीं चाहते या मेरे से सुनना नहीं चाहते वो चीज, तो दैट इज द डिफरेंस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव एज फिजिकल डिसेबिलिटी सच एज, या तो आपको सुनाई नहीं देता है या आपको बोलना नहीं आता है, तो आपका ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। क्योंकि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पूरा होने के लिए आपको सुनने भी आना चाहिए और आपको बोलने भी आना चाहिए, जो बेसिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अदरवाइज देर आर वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जो साइन लैंग्वेजेस होती हैं उससे भी पूरा हो जाता है, बट ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जहां ऑडियो का यूज होता है, राइट? सो उसके लिए आपको बोलना भी आना चाहिए और आपको सुनना भी आना चाहिए, तभी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिवली कंप्लीट होगा, राइट? नेक्स्ट इज लैंग्वेज डिफरेंसेस, अभी बार बार हम लोगों ने ये डिस्कस किया। एंड द डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अनफेमिलियर एक्सेंट, लाइक मैं हिंदी बात कर रही हूँ मगर कुछ और तरीके की हिंदी बात कर रही हूँ जो आपको समझ में ना आए, सो दैट इज अनफेमिलियर एक्सेंट। क्लियर? ओके मैम। अभी आ गया समझ में? अब मैं ये एक्सप्लेन कर दिया, मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करने जा रही थी बट द टाइम इज ओवर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैम सेंड द पीपीटी मैम। बाबा मैं सेंड करती हूँ पीपीटी क्लासेस के बाद, आई जस्ट टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास आई विल सेंड यू। टुमारो नॉट देयर ना मैम क्लास। टुमारो नहीं है, फिर कभी है क्लास? संडे को है? डोंट नो मैम। हाँ, तो whenever 6 classes are being assigned, this is the first class. 5 6 classes. classes we will discuss about the 5 units. In the last class I'll give you the PPT. If any notes are required, importance, everything will be discussed in the last class. ठीक है? मैम टाइम इज नॉट देयर ना मैम। What ओनली time 10 बेटा? minutes for preparation. हाँ, तो in the last class only I'll give you, I can give you PPT, Papa. I cannot share my PPT before the classes. Sorry. I'll share my PPT, but in the last class. Okay मैम। Yeah, you keep taking notes from the PPT. I'll be explaining from the PPT only, right? ओके मैम। So probably I don't know when our next class will be scheduled, but whenever it will be scheduled, we will finish off this principles of communication as well as we will try finishing the second unit as well. Okay. ओके मैम। ओके थैंक यू मैम। Okay. Bye. Take care. Bye bye. I have sent my email address again. I'm sending. If anything is there, to contact me anytime. ओके मैम। I'll be happy to help. Yeah. ओके। It's not going. Yeah. So my email ID is there, right? You can take note. Okay, bye. We'll meet in the next class. Yes. 12